Dear parents and students, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar, mobile number 7568077458, class 6th, subject History and Civics, chapter number 3, lecture number 6. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें, जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें. पेज नंबर 33. नेक्स्ट टॉपिक, contribution of the Egyptian civilization. What is the contribution of Egyptian civilization in our present life? The Egyptian civilization has contributed greatly to the development of human society. What's their basic motive? To develop human society. Let's find out about some of these contribution. Here now we will understand some contribution. Number 1, the famous thing of Egypt is the pyramids. The pyramids are stone tomb of the pharaoh. Stone tomb means कब्र या मकबरा. Pharaoh means king. Have a rectangular base and 4 sloping triangular sides. So it has a rectangular base and 4 sloping triangular sides, and sides are 4 but shape is triangular. The step pyramid of Saqqara was the first one to be built, and the oldest pyramid is Saqqara pyramid. पिरामिड्स में क्या होता है? पिरामिड्स में जो ये पैरो होते हैं, जो ये किंग्स थे, किंग्स के मकबरे हैं, उनकी समाधियां हैं वो एक तरीके से. सो बेसिकली कैसे बना होता था? उनका जो बेस होता था वो रेक्टेंगुलर होता था, और जो वॉल्स होती थी, वॉल्स की शेप होती थी ट्रायंगुलर, और ऑब्वियसली 4 वॉल्स होती हैं. The Great Pyramid of Giza was built for Pharaoh Khufu. Pyramid of Giza is famous for Pharaoh Khufu, the name of the king who's buried there. The Great Sphinx at Giza near Cairo has a lion's body and a human head, and the big statue, rock statue, name is Sphinx. In this, it is constructed by head, lion and body, head human and lion body. It is the oldest monumental sculpture in the world. It is the oldest sculpture in the world. Today the pyramids are a big tourist attraction. Pyramids is a big tourist attraction. Many tourists come every year to watch the pyramids. The pyramid form has inspired artists, writers, poets since ancient times. So it's a very attractive place. The pyramids have also inspired modern architecture with the construction of many iconic buildings that resemble them. Nowadays, in today's era, architecture make resembling buildings which looks like pyramids. पिरामिड ऑफ गीज़ा, गीज़ा का जो पिरामिड है फेरो कुफू का मकबरा है गीज़ा का पिरामिड. ठीक है. फिर एक और चीज़ वहाँ की फेमस है, ह्यूमन हेड एंड लायन बॉडी, जिसे स्फिनिक्स कहते हैं, जो गीज़ा में है, वो बहुत फेमस है. और सबसे पुराना ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट अगर कोई है स्कल्पचर मॉन्यूमेंट्स, तो वो है गीज़ा का जो स्फिनिक्स है. और
पिरामिड्स जो बने हुए हैं, जो उनका जो शेप है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनसे आर्किटेक्चर भी इतने इंस्पायर्ड होते हैं कि बहुत सारे बिल्डिंग्स उनको देखकर वो कंस्ट्रक्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, पेपर एंड इंक. डू यू थिंक दे हैव पेपर एंड इंक? व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस? The Egyptians first wrote on stone walls and clay tablets. So in the beginning they don't have paper. So for writing anything they use stone walls and clay tablet. Later they use paper. Then after they use paper which was made from papyrus, a water reed. papyrus से मिलकर बनता है. The word paper come from the word papyrus. papyrus से ही paper word बना है. The Egyptian used ink made up of soot and gum and water. They made the ink of soot, gum and water. Combine all these three and they use this product for writing anything on. Calendar. The ancient Egyptian calendar had a year that has 365 days long. So their year, in their that time they have 365 days in a year. The Egyptian civil calendar has divided into 12 months. Same, they have 12 months in a year of 30 days each, and in each month they have 30 days plus 5 extra days at the end of the year for celebration of religious festival. And they decide at the last of the year 5 days for religious and festival. इजिप्शियंस का जो कैलेंडर था, उनकी कैलेंडर में 365 डेज़ है. सेम वो भी 12 मंथ्स में डिवाइड है. एक मंथ में 30 डेज़ हो गए और लास्ट के जो 5 डेज़ होते थे, है ना, तो 5 डेज़ उन्होंने रिलीजियस फेस्टिवल के लिए बना रखे. नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमी. द इजिप्शियन स्टडी द नाइट स्काई, talking measurement from the star to accurately build their pyramids. Okay. While they making their pyramid, they have some instruments and they use these instruments at night with the help of moon shade. To observe the movement of the stars, they invented an instrument called Merkit. Merkit, it's a device which is used to construct building, which they use to mark the foundation of the building with the astonishing accuracy. Astonishing means बहुत बड़ा विशाल and accuracy means correct. So in astronomy, for making their, so it means usually for constructing of pyramids they work at night, because at night they can measure the floor and all this work. इजिप्शियन जो थे, जब वो पिरामिड्स बनाते तो नाइट स्काई जो होता था, स्टार्स वगैरह, उन सब की जो लाइट्स होती थी, उनसे उनको हेल्प मिलती पिरामिड्स की मार्किंग करने में, उसका कवरेज एरिया, उसकी हाइट, ये सब कुछ. एन इलस्ट्रेशन ऑफ इजिप्शियन स्कॉलर्स यूजिंग द मर्केट, here you can see. Next topic, mathematics. Although the Egyptians were not familiar with symbol for zero, yes, Egyptians don't know about zero and all, they calculated number based on the decimal. So they used decimal system. They had separate symbols for them and they had separate symbols. इजिप्शियन जो थे वहाँ पर वो लोग ज़ीरो को यूज़ नहीं करते, तो डेसिमल्स को यूज़ करते हैं.
The Egyptian knew about addition and subtraction, so they know how to do addition and subtraction, and they also had some basic knowledge of geometry, and they know geometry also. They use this knowledge in the construction of gigantic pyramids, and they use this addition, subtraction, and geometry for construction of gigantic pyramids. सो मैथ्स जो थी, इजिप्शियंस को मैथ्स जो थी वो पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन में काम आती, बिकॉज सपोज अगर जो वॉल है वो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगुलर वॉल के लिए पता होना चाहिए नीचे से कितना बेस रखेंगे, ऊपर से कितना बेस रखेंगे, तो वो सारी कैलकुलेशंस के लिए वो लोग ज्योमेट्री और एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, मेडिसिन्स. Mummies were prepared thousands of years ago, yet they are well preserved today. When they prepared mummies 1,000 years ago, and still the mummies and the skin of the mummies is normal. The process of mummification tells us that ancient Egyptian had an advanced knowledge of medicine and human body. So they are good in medicines. बिकॉज अगर किसी बॉडी को इतने सालों तक फ्रेश रखना मीन्स उसकी स्किन नॉर्मल रहना, इट्स इम्पॉसिबल. तो उन लोगों के पास कुछ ऐसे आयुर्वेदिक कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जिस वजह से वो कुछ स्पाइसेस और ऑयल से मिलकर एक अलग ही मेडिसिन बनाते जो कि बॉडी को प्रिजर्व रखती. द डॉक्टर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट कंबाइंड मैजिक स्पेल्स विद रेमेडीज. दे यूज मैजिक स्पेल्स मीन्स जो डॉक्टर थे उस टाइम के, तो वो लोग तंत्र मंत्र के साथ में इलाज करते हैं, मतलब दवाई तो दे रहे हैं बट तंत्र मंत्र के साथ. बोथ प्रीस्ट एंड डॉक्टर्स वर कॉल्ड अपॉन टू हील द सिक्स. इफ एनी पर्सन इज sick at their home, then they call priest and doctor both. What the work of priest? To chanting magic spell, and doctor who give remedies to him or her. So जब भी उनके घर में कोई बीमार होता तो वो डॉक्टर और प्रिस्ट दोनों को बुलाते. तो प्रिस्ट का वर्क क्या होता, वो तंत्र मंत्र से उसका ट्रीटमेंट करता, और डॉक्टर उपचार या कोई भी रेमेडी बताता. डिक्लाइन. By c. 1000 BC, the magnificent Egyptian civilization was on a steady decline. Foreign invasion and internal revolts weakened the civilization and sealed its fate. Egypt was effectively divided into two parts: the north ruled by the pharaoh and the south that normally owned allegiance to the king. इजिप्ट में जब फॉरेन इन्वेशंस आए तो धीरे धीरे इजिप्शियन का थोड़ा वीक हो गए थे वो लोग, और धीरे धीरे फिर इजिप्शियन टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था. जो फर्स्ट था नॉर्थ एरिया जो कि फेरो का था, और जो साउथ एरिया था वो जो भी नेक्स्ट फॉरेन इन्वेडर्स जो आए थे वो उनका था. The south of actual practice was ruled by separate hereditary rulers. Then south area is ruled by the hereditary back to back generation to generation. जो भी वहाँ पर रूलर थे वो उसे रूल करते. Medical instruments inscribed on a tablet belonging to the ancient Egyptian period. Here you can see the tablet is belonging to the ancient Egyptian period. Okay, your chapter is complete. Hopefully you understand this better, and if you don't understand, please repeat and watch the video one more time. Okay, mind map. Egyptian civilization.
What are their achievements? Achievement: architecture, pyramid, great sphinx, hagiographic, mummification, calendar, astronomy, mathematics, medicine, and papyrus. Political life. Who control their political life? Pharaonic era, ruled by pharaoh and hereditary kingdom based on divine rights. Social and economic life, society, upper class, middle class, and lower class. Religious belief, worship pharaoh as god and believe in life after that. Economic practice, agriculture, hunting and fishing crafts. Traded in grain, exported linen, jewelry and glassware, etc. It's a quick revise. Okay, your today's homework, class 6th, subject history and civics, chapter number 3rd, lecture number 6. Homework. Word meaning: shoot. It's a kind of powder, black color का powder. Astonishing, amaze, हैरान कर देना. Magic spell, तंत्र मंत्र. Steady, continuous. Revolt, विद्रोह. Faith, किस्मत. Allegiance, निष्ठा. Gigantic, विशाल. Remedies, उपचार. Okay, complete your work and send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.